So you can join the class if you are watching at this time, if you received the Zoom link. So we are going to start our class, and today we will be reading a very short story, and then we will be talking about it. We're going to have discussion, and then if we will have extra time, then you will be looking at some pictures and describing the pictures. So let's start the class. So again, if you are here at home and you are watching our live stream at this time, you can join the class. One more thing I want to clarify. The session I am starting live stream on Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Those sessions are live stream. उसमें आपको इनविटेशन नहीं मिलेगा मेरी क्लास ज्वाइन करने का, बिकॉज वो सिर्फ 30 मिनट्स की क्लास है जो मैं 30 मिनट्स की क्लास जो आपका 4 o'clock इवनिंग टाइम इंडिया का है उस टाइम पे करूंगी 30 मिनट्स के लिए, और वो प्योरली बिल्कुल इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास है जिसमें आप अपने घर में बैठ के मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि वी विल बी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक एक्सप्रेशन, सेंटेंसेस, उस पे आप प्रैक्टिस करो जो कि आपकी एवरीडे लाइफ में यूज होते हैं. दैट्स मोर लाइक अ सोशल इंग्लिश जिसको आप कह सकते हो. बट यहाँ पे जो आते हो आप सैटरडे की क्लास, इसमें हम सोशल एज वेल एज एकेडमिक लैंग्वेज भी सीखते हैं. जब मैं एकेडमिक लैंग्वेज की बात करती हूँ, दैट मीन्स के we learn about literature also, and we learn about science, technology, social study. I mean, we just read all kind of articles, news जो भी चल रहा है करंट इवेंट्स पे. बिकॉज एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो यू हैव टू नो अ लॉट इन एवरी एरिया इन ऑर्डर टू बिकम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. सो आप सिर्फ कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करके फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर नहीं बन सकते. इस चीज को आप प्लीज अंडरस्टैंड करो. सो जाहिद, लिंक मेरा है, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है तो आपको जूम का लिंक मिलता है सैटरडे की क्लास के लिए. बट जो मेरी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे की लाइव क्लासेस हैं वो तो आप घर में बैठ करोगे मेरी क्लास, तो उसके लिए लिंक नहीं चाहिए. So now I am going to start the class. So let's see. Hello. So we have Abu Rahman, we have Aman, Krishna Raj, Minhaz, Tahira, and Yuvraj. So Aman, just give me a very brief introduction, your name and your educational background, and where are you from? That's it. Yes, Aman. Yes, Aman. Hello, good evening, ma'am. Good evening. My name is Amandeep Singh and I am from Banda, Uttar Pradesh, and it is situated in India. I am basically a student I have done my graduation in Bachelor of Science, and currently I am pursuing my Master of Computer Application from KNIT Sultanpur, which is situated in Uttar Pradesh. Oh, that's fine. Okay. And ma'am, my hobbies are playing cricket, video games, reading books, novels, watching shows. God, you have so many hobbies. Yes, ma'am. Okay. रमेश, yourself, आप अपने आप को अनम्यूट पता नहीं क्यों करी जा रहे हो. मैं आपको म्यूट, प्लीज म्यूट. Okay. So Krishna Raj. Krishna Raj. My name is Krishna Raj Kesi. I am from Nepal. I study in BSc third year. I want to learn English language. Or are you student? Are you student or you work somewhere? Krishna?
Okay. Minhaz. Minhaz, Yes, ma'am. welcome to my class. So tell me a little bit about yourself, please. I am Minhajuddin Gaji. I'm from India. Currently, I am doing MA in Arabic language. I mean, And language you said? Arabic language. Okay, okay, good, okay. And So, yes, ma'am. Arabic language mean Farsi, Dhari, what else? No, Arabic is Just Arabic? just Arabic. Okay, good. Okay, I thought all the languages from. No, only Arabic. Most of the Middle East, their native language, Arabic. Right. Yes, yes. I have students here, they speak Arabic. Okay. Okay, good. Thank you, So, ma'am. welcome. Is there anyone I missed? Tahira? Tahira? Yes, ma'am. I think you were here last time in my class. Yes, I was. Oh, okay. So you are the one who is entrepreneur, right? Yes, you are right. Okay. Okay. Welcome, everyone. So, did you watch my yesterday's class, the live stream class? Anyone? कल जो मेरी सुबह क्लास थी अमेरिका से 5:30 आपके इवनिंग 4 o'clock इंडिया का टाइम बता रही हूँ मैं, नॉर्दर्न इंडिया का. आई डोंट नो पाकिस्तान का मेरा ख्याल थोड़ा 30 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है और बांग्लादेश का आई एम नॉट 100% करेक्ट हियर, बट वो 4 o'clock मेरी क्लास है जो मैंने रेगुलरली 4 o'clock इंडिया evening time. So if you are available that time, please join the class because we will be practicing a lot of speaking skills. और उसमें जो है आप मेरी क्लास ज्वाइन नहीं करोगे, लाइव आप अपने घर से मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे. Let's start. Yes, sir. मैंने देखा है. Oh, okay, okay. So again, I'm telling you guys, please try to watch the lessons and practice with it. It's not. Again, मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि fluency, if you want to become fluent, then you need to practice a lot. Right? It's not gonna happen only in practicing once a week with me, but you should be consistent about this, right? Okay, so I am going to share with you. I don't know what I'm doing. So we're gonna read one story and then we will practice. Okay, so this time, who is joining my class? See here, guys, I am not immigration. I don't belong to immigration department. I don't have any information about how you can come to America. So I am an educator and my profession is to teach, right? So Jahid Hussain, I am telling you, you need to watch my some of the videos. I have a lot of information in all my videos. So please, आप थोड़ी videos watch करो, वहां से information आपको मिलेगी कि आपको मेरी क्लास किस तरह से join करनी है. So इस तरह इस टाइम पे मैं आपको वो नहीं बता सकती. So please try to understand. कुछ काम खुद भी करो. Okay, so let's see. There are so many things which I have to open at the same time. Okay, so who knows what is this? What is this? Anyone? Can you name it? कभी देखा है आपने इंडिया में? What is this?
Hmm? Come It is on. toy. Toy. What kind of toy? Do you It know is that? toy. Yeah, it is toy, but what's the name of this toy? Do you know that? Do you know the name of this toy? It's a yo-yo. Yo-yo, you call it yo-yo. Okay, it's a Chinese toy. Okay, so my first reader, volunteer, everyone will get a chance to read. So who wants to read? Let's go ahead. The first paragraph only. I want to read, ma'am. Go ahead. Ma'am, Yes, go ahead, please read. I am going to make a time capsule, Jenny told her parents at the breakfast table. Dad looked up from his coffee mug and smiled. Sounds interesting. Say hello to the pilgrims for me. Right. Okay, so my first question is, where do you think this story is taking place? कहाँ पे? Setting क्या है? Where this story is taking place, where it's happening, कहाँ पे हो रहा है ये? Anyone? It's happening at the home at Yes. the time of breakfast. Yes, it's in the morning, right? It's happening in the morning and at home. Who's home? Who's home? Anyone? Jenny. Jenny and her parents, right? So yes. So what she is saying, what she wants to do. Anyone? What she wants to do? I am going to make a time capsule. Jenny told her parents, right? So what do you think? What is time capsule? What kind of things she is talking about in time capsule? Anyone? Just make a guess. There is no right or wrong answer, guys. Just think about it. Time, something is related with what? Mom, I think it's a tablet. She's going to make a tablet, which is So something is related with time, right? She's talking about me. That is related with, right? Okay, so let's read one next. Okay, so who is my next reader? Come on, not the same person. Someone else. Okay, Tahira, you read. Logging Jenny shook her head. No, Dad, you are thinking of time travel. I am building a time capsule. It's like a memory box. I watched my principal dig on up from our schoolyard. Yesterday, some students viewed the capsule 30 years ago. I had a lot of old stuff in it, so we could see what life was like back then. Okay. Is there anyone else who wants to read the same paragraph? Anyone? Come on, who is there? I have to see. Let's see. Minhaz Wana. Read it, please. One time.
Vana, Yes, ma'am. read, start ma'am. from Laughing, Jenny shook her head. Anna, Vana, sorry. Read from the beginning. From the beginning means starting se shuru karo. I am going to make. Okay, ma'am. I'm going to make a time capsule. Jenny told her parents at the breakfast table. Dad looked up. Dad looked up from his coffee mug and smiled. Sounds interesting. Say hello to the pilgrims for me. Say hello to the pilgrims for me. Okay. Keep Ma'am, and reading. then a second para too. Keep reading, please. Yes. Okay, ma'am. Laughing, Jenny shook. Come on. आप time बहुत लगाते हो. I don't know what you're thinking. I told you, read the whole page. Laughing, Jenny shook her head. No, Dad, you are thinking of time travel. I'm building a time capsule. It is like a memory box. I watched my principal dig one up from our schoolyard yesterday. Some students buried the capsule 30 years ago. It had a lot of old stuff in it, so we could see what life was like back then. Okay. So what she wants to make? Anyone? Not Vana. Anyone else? Please. This is the speaking practice here. We are doing it. But you need to read something Breakfast. about it. Yes. Breakfast, madam. I am going to make a time capsule. Who she is telling? Jenny. I am going to make. Who she is telling to? Jenny. She is telling to who? Jenny. Dad, her dad. Yes, to her, Jenny. Dad. Her dad. right? To her parents. Is that? Talking right now, everyone mute. 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 Yes, please. ये बड़ी प्रॉब्लम है. आप थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि नॉइस पोल्यूशन बहुत है बैक पे. Please. This is my humble request to everyone. Okay, so I'm going to make a time capsule. Jenny told her parents at the breakfast table. So they were eating breakfast, morning time, and she just what? She just disclosed her what she wants to do. She just said, okay, I'm going to make a time capsule. Dad looked up from his coffee mug and smiled. Sounds interesting. Say hello to the pilgrims for me. So you don't know, the pilgrims are the people who came in America in like 1600s or 1700s or 1800s, like back then they were keep coming here. So pilgrims जो के यूरोप से आए थे बहुत लोग उस टाइम पे. So what dad is thinking that she is making something going back in time, right? Laughing, Jenny shook her head. No, Dad, you are thinking of time travel. I am building a time capsule. It's like a memory box. Now this one, time capsule is like a memory box. It's also a simile when you compare something with something else. It's called figurative language. I watched my principal dig one up from our schoolyard yesterday. Some students buried the capsule 30 years ago. It had a lot of old stuff in it. So we could see what life was like back
then. So बात क्या हो रही है? Why she thought about it? Why she want to do this? Do you want to see the screen and then talk? Anyone? Okay, I'm going to keep this open. So why she wants to do this? And first of all, why she decided to do it? Why? Bolo. हेलो एवरीवन. ओके, सबसे पहले मैं थोड़ी सी हिंदी में भी बात कर लूं आपसे, ठीक है? क्या आपको समझ आ रहा है जो आप पढ़ रहे हो? कोई कंफ्यूजन है इसमें? Yes, I have. हार्ड है ये रीडिंग? मुश्किल है रीडिंग? Yes, it is. It's okay. Everyone, please, just it's okay to Yes, talk. ma'am. ओके, देखो, सबसे सिंपल जो लैंग्वेज को लर्न करने का तरीका है, द इनिशियल वन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हायर लेवल वन, बट द इनिशियल वन इज कीप इन माइंड 5 W's. 5 W's के बारे में तो आप बहुत सुनते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं, who, what, where, when, why, right? And who we are talking about? Who is in this story, the main character? Jenny? Jenny, ma'am. Right? And Jenny is the main character. where she is? Where she is? She is in her home She's at her talking home. with her dad. Yes. Yes, Telling ma'am. her dad, talking to her dad, and telling him that she wants to make a time capsule, right? And Yes, ma'am. why she decided to do it? Why? Because she saw one time capsule, her principal dig. Dig क्या होता है? Anyone know? जमीन से खोद के निकालना किसी चीज को. Okay? So what did she find something? Principal ने क्या find out किया वहां पे? कि किसी ने कोई 40 years पहले की जो चीजें थी वो दबाई हुई थी में, और उन्होंने देखा कि ओके 40 years ago किस तरह की चीजें थी उस टाइम पे, वो किसी ने दबा दी थी जमीन में किसी बॉक्स में. दैट वाज अ टाइम कैप्सूल. अब अगर आप कैप्सूल की बात सोचो तो आप कैप्सूल सोचोगे कि जो मेडिसिन खाने वाला, आप सिक होते हो तो कोई मेडिसिन मिलती है तो वो कैप्सूल भी आते हैं, राइट? यस, वो. सो देखो, ये कैप्सूल जो है वो एक तरह से मल्टीपल वो वर्ड है, मीनिंग कैप्सूल मीन्स, बट वो बहुत ही जगह पे डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट वे से यूज होता है. So capsule is like she, in other words के उसने एक तरह से कुछ चीजें उस टाइम की दबा दी. आप पता नहीं हिस्ट्री के बारे में कितना जानते हो. कई बार आप सोचते हो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पता है आपको आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? Who are archaeologists? Anyone? आपको पता है आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अगर आपको पता है बोलो हाँ, नहीं पता तो बोलो नो. People who No. study on आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो खोज करते हैं No, जमीन से. मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा शायद आपने सुना हो, उनको वहां से क्या मिला, उससे वो आप देखते हैं कि उस टाइम की लाइफ कैसी थी, राइट? पुरानी चीजों से पता चलता है ना कि पास्ट में लोगों की लाइफ किस तरह की थी, वो किस तरह के यूटेंसिल्स यूज करते थे. यूटेंसिल्स मीन बर्तन किस तरह के यूज करते थे, उनका सीवरेज सिस्टम कैसा था, उनके घर कैसे थे. आप पढ़ते नहीं हो हिस्ट्री में कितनी बार कई चीजें? यस और नो? Yes, ma'am. कनेक्शन बना रही हूँ मैं आपका. म्यूट. तो वही तो ये जेनी क्या कर रही है? जेनी यही कह रही है कि मुझे भी कुछ इस तरह से करना है कि मैं कुछ चीजें अभी दबा देती हूँ जमीन में जो आजकल कॉमन है, जो मेरे पास है, मैं वो दबाना चाहती हूँ, जिससे कि बहुत सारे सालों बाद अगर कोई फाइंड आउट करे तो उनको आज की दुनिया की लाइफ पता चल सके कि उस टाइम पे लोग किस तरह से रहते थे. That's what she's saying.
That's what she was telling. अब जो टाइम मशीन है, टाइम मशीन, if you are from India, I don't know how many of you remember that show, Ravi Krishna. You know Ravi Krishna? He used to have a show, टाइम का पहिया पीछे घुमाने के लिए, जिसमें वो आप लेके जाते हैं, वो जिसको रिग्रेशन करते हैं. रिग्रेशन मीन्स कि आपको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो टाइम को पीछे लेके जाते हैं. ओके, नाउ यू आर गोइंग इन योर चाइल्डहुड, नाउ यू आर गोइंग बैक टू योर प्रीवियस लाइफ. अब आप कहाँ थे? यू अंडरस्टैंड? वो टाइम का कहते हैं पहिया पीछे घुमाना, राइट? वो है टाइम मशीन. एक तरह से वो मशीन है. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर दैट शो, इफ यू एवर वॉच दैट शो. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग? किसी को समझ आ रहा? यस मैम. यस मैडम. तो इसमें आप बिलीव करते हो रिकार्नेशन में या नहीं करते, उसकी बात नहीं हो रही. यहाँ पे बात हो रही है कि एक टाइम मशीन है कि टाइम को पीछे लेके जाना. अब अगर आप कॉमन लैंग्वेज में देखो तो हम कहते हैं कि हम पास्ट को पीछे नहीं जा सकते, राइट? अब आम लैंग्वेज में तो यही है ना कि जो टाइम बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आता. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बट इसमें क्या है? इसमें वो है कि टाइम मशीन मीन्स के समय को पीछे लेके जाना, राइट? अब समय को पीछे कैसे लेके जाते हो? आप अपनी मेमोरीज से भी लेके जाते हो समय को पीछे. अब व्हेन यू टॉक अबाउट योर चाइल्डहुड, ओ बचपन में ऐसे या पिछले इस तरह हुआ, तो आप उसको घुमाते हो. कहाँ घुमाते हो? अपने माइंड में घुमाते हो ना. टाइम को पास्ट लेके जाते हो ना. यस और नो? यस मैम. थ्रू टू सबकॉन्शियस. डीप बातें हो रही है. तो वो एक उसको देखो एक तरह से सिंबलिज्म के हिसाब से लो कि वो वही बात कर रही है कि जो वो डैड ने सोचा कि वो टाइम मशीन की बात कर रही है. सो पिलग्रिम्स की बात कर रही, कि उसने कहा कि अच्छा तो पिलग्रिम्स पे बात करेगी. नो, नॉट अबाउट पिलग्रिम्स. मुझे कुछ चीजें दबानी है. आई वॉन्ट टू बरी. बरी क्या होता है? किसी चीज को दबाना. You bury something in the soil, right? In the ground, under the ground, and you cover it with soil on it. So somehow she said, because she noticed that in her school, the principal digged up the soil and she found out the time capsule, and that was 40 years old, right? 40 years पुराना कोई टाइम. और उसमें अगर देखो उसने टाइम कैप्सूल 40 इयर्स का निकाला तो उसमें क्या निकला होगा? थिंक अबाउट इट. क्या निकला होगा? आज की चीजें. उसमें क्या वीडियो गेम्स निकली होंगी? उसमें क्या प्ले स्टेशन निकला होगा? उसमें क्या आईफोन निकला होगा? थिंक अबाउट इट. क्या उसमें आईफोन निकला होगा? जो निकली होगी. आज की चीजें तो नहीं ना निकली होंगी उसमें, तो पुरानी चीजें ही होंगी ना. तो दैट्स व्हाट शी वांट्स टू डू. अब आपको समझ आई क्या था उस पेज पे? यस मैम. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. So she said, I am going to make a time capsule, and Dad thought, oh, so say hello to pilgrims for me. So Dad कहता है अच्छा तो pilgrims को मेरी तरफ से hello कहना. They're just joking around, right? So laughing, Jenny shook her head. No, Dad, you are thinking of time travel. I am building a time capsule. Time capsule is like what? A memory box. अब memory क्या है? मेमोरीज. आपकी मेमोरीज नहीं है? आपके पास कितनी मेमोरीज हैं अपनी लाइफ की? यस और नो? इट्स लाइक Yes, ma'am. what she said. I watched my principal dig one up. Dig one up means उसने एक निकाला. dig खोद के निकाला. up from where? फ्रॉम आवर स्कूल यार्ड. अब यार्ड क्या मतलब है? यार्ड है, आप इंडिया में या पाकिस्तान में गार्डन भी कह देते हो उसको, या ग्राउंड कह देते हो, या तो यार्ड मींस, इन अदर वर्ड, यार्ड इज लाइक अ गार्डन. तो घास जहां पे लगी है, प्लेन एरिया है,
तो वो उसको कहते हैं, अब ये जैसे मेरा घर है तो मैं बैक यार्ड है जो मेरे घर के पीछे वाला हमारा गार्डन है, फ्रंट यार्ड है जो मेरे घर के सामने वाला हमारा गार्डन है। हम गार्डन नहीं कहते, यार्ड कहते हैं उसको। सो ये एक अमेरिकन वर्ड है यार्ड, जो ब्रिटिश में आप कहते हो गार्डन। तो और स्कूल यार्ड, when yesterday, so she is talking about something happened yesterday. Where did it happen? At school. Where did it happen? At school. What happened? Principal dig one memory box. Right? Now, some students, वो कहाँ से आया वो बॉक्स, किसने रखा था, वो बता रही है। Some students buried the capsule 30 years ago. That means कि वो स्कूल क्या है? That's a new school or old school? Old school, ma'am. School, right? So same school, it's very old school, and some students उसी स्कूल में जो स्टूडेंट्स 30 years पहले पढ़ते थे, right? It had so they buried it. Some students buried the capsule 30 years ago. It had, अब ये देखो आप ग्रामर सीखते हो, has, had, have, is, was. This is something happened in the past, right? So it had a lot of old stuff in it. क्या है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस है, टेंस की बात करते हो तो। सो वी कुड सी व्हाट लाइफ वाज लाइक दैट देन किसकी बात हो रही? उस टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम पे लाइफ किस तरह की थी, क्या पर्पस था, व्हाट वाज द पर्पस फॉर दोस स्टूडेंट्स टू bury that box? What was the purpose? क्या पर्पस था उन स्टूडेंट्स का, क्यों उन्होंने वो बॉक्स बरी किया था? Because they wanted to know upcoming days whatever person will be there, they can find out which type of environment was there, which type of things is used in the past times. So right. For that purpose that thing was buried. So now listen one more thing. Think about the history. History lessons are particular, right? You read history in every class when you are in school. I remember, right? Every time you read about history. What is the purpose? Why they write history? Why historians, they write the history? Why they do it? So the people in future, they get to know what happened next, right? In that period of time. That's the way we learned about it. 200 years ago ऐसे हुआ था, या 1000 years ago ऐसे हुआ, before Christ BC, right? You know that. So people are right. That is also the same purpose. How was, the king, and that archaeologists do. They also do the same thing, right? And they find out things from the past life, and they find out, okay, उस तरह से लोग life जीते थे, इस तरह की life थी इस time से. So anyway, next one. So now let's read the next one. Who is my next reader? Come on, guys. If you didn't get a chance, you can go and read. I'm reading it. Okay. Yes. Take an initiative. I know school may, I remember. I will read. Go ahead. Read. And not मेरी अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी नहीं है. We are just breakfast. Breakfast. Jenny went to her dad's workbench in the garage. She looked around and found an old coffee can filled with knots and balls.
She dumped them out, so she could use it as her time capsule. She scratched her head. What should she put in the can? With her kitten falling close behind, Jenny browsed through her things. She grabbed her favorite book, her yo-yo, and some photos. She packed them in the can. She pulled off her charm bracelet and placed it in the can too. What else should I put in her? She asked Kitty, the newspaper. So people will know what happened today. Jenny ran downstairs and brought back the newspaper. She folded it up and in the can it went. Okay. So now, who can tell me what happened here on this page? And I want to tell in your words, not just read it and tell me. And please keep in mind 5 W's. Who, what, where, when, why, or even how also if you want to think about all those things. What it means. Yeah, right? Where, kahan pe, why, kyun hua, who, kisne. So all those 5 W's. And when you think about this, you don't need to tell me everything. Just use, make the connection with your knowledge and express it. That's it. डरो नहीं, यहाँ पे कोई भी कंपटीशन नहीं हो रहा, किसी का किसी के साथ कंपटीशन नहीं है आपका. So I just want you to be fear free, जैसे कहते हो ना, fearless होके, डरो नहीं, join the class, बिना डर के, बिल्कुल कोई स्ट्रेस मत लो इस टाइम. डूब जाओ, जैसे कहते हैं ना, क्लास मुझे सीखना है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे डरना नहीं. Okay, so come on, just use your words and just चलेगी, just बोलो. That's important. Hello, ma'am. Yes, How are you, ma'am? I am good. So tell me what's on the, if you were here and if you were listening, then talk about what's happening on this second. We are reading a story about a girl. Now I'm going to tell you, we're reading about a story about a girl, Jenny, and she was telling her father about what she wants to do. She wants to do what? She wants to make a memory capsule. So she wants to put all those things in the memory capsule what she has at that present time. Because why she got so interested in it? Because she saw that at her school, her principal dug that out, and that time capsule was buried by students 30 years ago from the same school. Right? Okay. Anyone? Hello? Yes? Ramsha Ali, if you don't have a link, you need to WhatsApp me, okay? And you find my WhatsApp number everywhere on my YouTube video. Okay. So, come on guys, क्या हो गया? सारे क्लास में कोई भी नहीं है? हैं बहुत सारे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 students तो हैं. Come on, बोलो. नहीं, सारे सोच रहे हैं, ओके, दूसरा बोलेगा. That's what you are thinking. Okay, so now let's talk about that. After breakfast. So that means they finished the breakfast, right? And then after breakfast, Jenny went to her dad's workbench in the garage. Yes, you in India you say garage, but in American English we say garage. So she looked around
and found an old coffee can filled with nuts and bolts. What is nuts and bolts? Is there anyone knows nuts and bolts? अपनी language में बता दो, that's fine if you understand. Ma'am, it's a kind of small screws. Yeah, screws, जिसको हिंदी में कहते तो कील कब्जे, right? Yes, ma'am. So nuts and bolts, yes. So she dumped them out. अब dump them out का क्या मतलब है? देखो इंग्लिश बोलनी है तो इंग्लिश के वर्ड्स तो देखो ये सारे इंग्लिश ही तो है. मैम बाहर रख दिया उसको उठा के. Yes, dumped them out means उसने उनको बाहर निकाल दिया जो कील कब्जे थे. किसने? Coffee, old coffee can. Let me highlight it so you can understand what I'm talking about. I'm sorry. So let's use the colors. So she dumped them out. Okay. So let's use the light color. So she dumped them out from what? Old coffee can. Old coffee can में से उसने old coffee can filled with nuts and bolts. She dumped them out. उसने उनको बाहर निकाल दिया. Why? Why? अब देखो जब why आता है तो ये so जो है it's a keyword जिसको आप signal words भी कह देते हो. हम signal words आप इसको transitional words भी कहते हैं. आपने सीखे होंगे ये grammar जब सीखते हो आप. तो ये this word here this one so ट्रांजिशनल वर्ड्स है. क्यों? सो का मतलब है जब why, the reason क्या है? She dumped them out so she could use it as her time capsule, right? उसने इसलिए उनको जो nuts and bolts थे old coffee can से बाहर निकाल दिए. so उसमें वो किस लिए यूज कर सके उसको? किस लिए यूज कर सके? as her what? Time machine. Time machine के लिए वो use कर सके उसको. So what she wants to make? What she wants to build? She wants to build a time machine. Time machine. Time machine के लिए वो उसको use कर सके. Right? अब अगर आप old coffee can is a noun, yes or no? Is it a thing? Noun. Is it a thing? Noun, right? अब dumped them out. ये क्या है? Phrasal verb. Time capsule is also a noun, right? Or so is a keyword, signal word. That means why. She scratched her head. अब scratch क्या होता है? बोलो जरा. What does scratch means? Scratch खराशना. खराशाना. सिर खुजलाना, scratched. Even you scratch on your skin, right? Or yes, scratch means yes. Yeah, you said that word. What in Hindi? Khurochna. Kharochna. Thank you. So scratched her head. Her head. What should she put in the can? Okay. क्यों scratch करी थी वो head अपना? क्या उसके head में खारिश हो रही थी? Why? Because she dumped them out. What to put in the can? She was thinking, right? Thinking. She was like, what I'm gonna do like this, right? Thinking. She was thinking. What should she put in the can? That's what she was thinking. So with her kitten following close behind. अब इसका क्या? Kitten, you know kitten? Anyone? Kitten क्या है? I'm cat. Young cat. Baby cat. Right? Following close behind. अब follow करना क्या मतलब है? Think about अब जैसे cats हैं या dogs हैं, अगर वो आपके pets हैं तो वो अब घर में आप चलाना वो आपके पीछे पीछे आते हैं कि नहीं? Yes. Pet हो तो सोचो. Yes, ma'am. Following you, they just follow you everywhere, wherever you go. That's what they do, right? So her kitten following close behind. कहाँ पे है वो kitten? अब ये preposition की बात करो तो preposition सीखते हो ना grammar में, तो following close behind कहाँ पे हो? पीछे है, पीछे आ रहा है उसके.
उसको फॉलो कर रहा आ रहा है, राइट? Yeah. जेनी ब्राउज्ड थ्रू हर थिंग्स. अब देखो ब्राउज्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? व्हाट इज ब्राउज? हाँ, Ma'am, to search for anything. ब्राउज मीन्स, अब देखो ब्राउज आप इंटरनेट पे भी, आप ब्राउजर है जो यूज करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, राइट? गूगल, यू ब्राउज द वेबसाइट, यू ब्राउज द यूट्यूब चैनल्स, राइट? ढूंढते हो ना, सो सर्च करते हो, फाइंड आउट करते हो. सो दैट्स व्हाट शी डिड. जेनी ब्राउज्ड थ्रू हर थिंग्स. उसने जो भी उसकी चीजें थी वो देख रही थी कि अच्छा ये चीज डालूं, ये चीज डालूं, ये चीज डालूं, थ्रू द हर थिंग्स. She grabbed her favorite book. अब grabbed का क्या मतलब है? देखो मैं verbs को कर रही हूँ, कुछ verbs को मैं. Ma'am, to hold something, पकड़ना मैम. हाँ, so grab means को पकड़ना. तो she grabbed her favorite book. उसने जो उसकी सबसे ज्यादा पसंदीदा, जो उसको सबसे favorite book, she grabbed that book. Her yo-yo, so book is a noun. So that means she put what? She put the book, she puts a yo-yo, which I showed you in the beginning, कि yo-yo क्या है, एक तरह की game है. Then she put what? Some what? Photos, right? And she packed them in the can. So अब किस में डाल दी उसने? Can में. डब्बे में. Everything she packed it in the can. So can कौन सा है ये? Coffee can, All right? coffee. Coffee can. So she pulled off her charm bracelet. Pulled off क्या है? Phrasal word. अंदर या उसने उसको भी pulled off करके अपना charm bracelet होता है जो आप हाथ में, bracelet, right? हाथ में पहनते हैं, ज्यादातर कई लड़के भी पहनते हैं bracelet, but लड़कियां यूजली पहनती हैं जैसे, तो वो bracelet कहते हैं. And placed it. So her charm bracelet. So please, अगर आपकी कोई pronunciation आप गलत, मतलब थोड़ी सी different कर रहे हो, तो you are listening how I say the words also. So bracelet, and placed it into the can too. Now here, I am telling why we are using this to here. What does this word mean? Tell me. To means bhi. हाँ, भी. Ma'am, she put it all together. Right. She put the blanket, yo-yo, and she pulled the, so she placed her bracelet too. बाकी चीजें तो डाली और वो भी डाल दिया उसने. Excellent. Two. अब two देखो तो two कितनी तरह के हैं? 3 types के, right? Sound same है. जो spellings हैं वो different हैं. TO2 means direction, going to the park, right? Going to watch a movie, going to the theater, you are going to somewhere, right? Going to call my friend, I'm going to call my friend too, that is TO2. This, and then there is 2 means number, TWO2, and this 2 means bhi, उसने वो भी डाला और वो भी डाल दिया उसने, right? What else should I put in here? Who she is asking this sentence? Let's talk about this. Who she is asking? She is asking to herself. Yes, she's talking to herself. What else should I put in here? She asked, no, she asked Kitty. She's talking to Kitty. Okay. You know that, like, if you have pet, you talk to them. And if you joined my class in June, we were reading, actually, we started one chapter book. We didn't finish it, but that was also India Apal. She had a dog and she was talking everything to her dog. I don't know if you watched those lessons from YouTube live Zoom classes lessons. If you didn't, my advice is to watch, and you will be learning a lot about articles, like academic language, a lot of academic language. So she asked Kitty, the newspaper? So she's questioning herself, right? The newspaper. So people will know what happened today. So उसने क्यों, क्या newspaper? Why she wants to put the newspaper? देखो न्यूज़पेपर पे क्या होता है? Think about it. न्यूज़पेपर पे सबसे ऊपर क्या है? Date है, year है,
डे है, राइट? न्यूज़पेपर आते हैं, आपके लिखा होता है ना कौन सी डेट का है, कौन से ईयर का है, उस दिन क्या डे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, राइट? यू नो दैट, राइट? सो उससे 100% किसी को पता चल सकता है कि ये जो बॉक्स है ये कब रखा गया, right? So that's why she wants to put a newspaper also. So people will know what happened today. What happened today means when, this day, when she is putting it in the box. Then he ran downstairs. Ran. What is the base word for this word ran? Anyone? Ran का base word क्या है? Run. So down Rain ही आएगा. and brought back. What is Run, this? run. ये जो verb है brought, इसका base verb क्या है? Bring back. By. Regular. By. ये जो दोनों verbs हैं ये regular verbs हैं और irregular verbs हैं. मैं ग्रामर की बात कर रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ग्रामर इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं कहती 100% ग्रामर सीखो, बट लर्न ग्रामर विद इन द कॉन्टेक्स्ट, देन यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो है ये रेगुलर वर्ड्स हैं या इररेगुलर वर्ड्स हैं? Irregular. इररेगुलर हैं, राइट? क्योंकि जो रेगुलर हैं, जैसे गिव मी एग्जांपल, रेगुलर वर्ड्स की कोई एग्जांपल. जैसे देखो ऊपर ही देखो तो डंप, डंप्ड, राइट? डंप, डंप्ड रेगुलर है, ईडी लग गया, राइट? तो वो बन गया पास्ट. Look, look. यस, लुक, लुक्ड. जंप, जंप्ड, राइट? Yeah. Walk, walked. Cook, Look. cooked. Yeah. Yes, okay. Ran, run, run, ran, right? So ये ऐसे buy, brought. Okay. Back she folded. Folded is regular too. Fold, folded, because जिसमें भी ed लगता है वो regular है. It up and in the can it went. अब went का base verb कौन सा है? Who knows? Go. Oh, go, went, gone, right? And this one is irregular. So ये भी irregular है. Ran, brought, and went. All are irregular verbs. Okay, so अब क्या हुआ यहाँ पे? Now tell me in your. बोलो. Anyone? Yes, ma'am. When she asked to Kitty, then Kitty told newspaper means I still have to put in that box. So he ran down a stairs. Means he go down through the downstairs for taking back to the newspaper. Then that thing was folded and put in that box. Yes, Ramshali, such verbs whose second and third form are made just to add suffix. Yes, and that is suffix is what? Ed in their end. Yes, jumped, jumped. You are absolutely right. It's suffix. Suffix means जो end पे लगते हैं words, उनको suffix कहते हैं. जैसे ing, ed, ly. There are so many. But ion, right? Okay. So now. So who can, okay, I'm just gonna hide that screen. I want you to tell me what happened so far in the story in your words. Is there anyone who wants to talk about it? देखो कोई बात नहीं, आप कुछ सिंपल इंग्लिश में बोलो. मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझे हर वर्ड वो स्क्रीन से बताओ. आपकी समझ में अब तक क्या आया इस स्टोरी में वो बताओ. That's it. And I can give you a sentence starter. You can say, this story is about a girl named Jenny, and then start. Okay. Come on. Anyone? Hello, Shivam. Are you the same Shivam? Yes, ma'am. What do you think? You were here when we started this story? Yes, ma'am. Do you want to talk about?
Yes, ma'am, sure. Yeah, this story is about a little girl and who's very excited that in her school she is very excited about uh, about the all stuff which were placed in her schools. Means that the theme of the story is that whenever you see all stuff, you remind the all things, all things, the all story which are related with those stuffs. Fine. So when did it happen, right? Yes. Okay, good. Anyone else? Anyone? So you are telling me theme, memory box. Okay. Anyone? Krishna Raj, Tahira, Akhtar Ali, Amman, Anand Kumar. Come on. Hello. मत जाना क्लास छोड़ के बोलने. Hello. Yes, yes. Aman. Hello, ma'am. There is a girl named Jenny who is talking with her father about making a time capsule because she looked his principal what they are digging off yesterday, and now she is also ready to make his own time capsule, and she decided to put a lot of things like yo-yo, old newspapers. It is like basically a old coffee can in which she is putting all the stuff. Yes. And she is talking with her kitty and doing all the things. Yes, yes. Okay, yes. I don't remind the objects that she placed in the box. Yo-yo and what else? Newspaper and bracelet. Her favorite book. Yes, okay. yes, ma'am. A favorite book and a bracelet. Beautiful bracelet. Charm. Yes. So, Aman, you're like most of the information that you're attaching is correct. The only thing where you need to pay slightly attention is about we use when we talk about male, right? And her we use when we talk about a woman or a girl. Right? It's the object pronoun. Okay, ma'am. No, but you were on some places you used it correctly, her, but on 2-3 places you said his. So when you speak, just pay a little attention on your his and her. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Excellent. Excellent. Okay, who is my next person to tell me in your words? This is say in your words. That means you are not looking up anything on the screen, and that is another way to paraphrase it or even summarize it. Summarize होता है बहुत important information बताना. Paraphrase होता है अपनी language में उस चीज को बताना. तो उसमें aspects information. When you summarize it, just talk about most important information. Okay, बोलो कौन है जिसने अभी टर्न नहीं ली? तो आप मिक्स करके भी बोल सकते हो. देखो आपको मैं इतनी परमिशन भी देती हूँ. You can mix your language and English together and try to speak it. That's okay. थोड़े मिक्स कर लो language. कौन है? कृष्ण राज, अख्तर अली वजीर. हेजिटेशन को दूर करो प्लीज. Yes. Anyone? It's simple. Simple से बता दो कि girl named Jenny. Okay, ma'am. Yes. Yes. Ma'am, this story is about a little girl whose name is Jenny. He stretched his hand on her head. Ma'am, I'm sorry.
No, you're fine. She scratched her head. You are paraphrasing it. Okay, she scratched her head that what she could add in her what? In her time capsule, right? So what did she add Yeah. then? Tell me the things, some of the things she added in that box. Anything you remember she added in the box? Okay, so let's read the next screen and then we need to move on. Guys, is this hard? Tell me. What do you think? This lesson is hard for you? आप बोलो, please. कोई उसमें नहीं. इस तरह के lessons को आपको लगता है because the way we teach here in America is discussed. We talk a lot with students with hundreds of questions. So that's the way we teach and the students acquire the language. Acquire the language. You should not practice with reading the sentences and then memorizing them. Okay, now who is my next speaker? Let's start. Yes, ma'am, I would like to be the next speaker. Okay, go ahead. Yes. Ma'am, may I start? Sure. Yeah. Meow. Kitty nudged a ball toward the can. Sure, Kitty, I will include your ball. Jenny put Kitty's ball in the can. Jenny put the top on and sealed the can, and with tape on the front, she wrote Jenny and Kitty's time capsule with a thick black marker. She carried the can outside. After grabbing a shovel from the shed, she buried her time capsule in the garden. All done, she told Kitty. After a few minutes, Jenny sighed. What should she do next? She couldn't yo-yo or read her favorite book. She'd buried those. Now she missed them. Right. Okay. So, meow. Kitty nudged the ball toward the can. So usually, as you know, the animals, they do so many things with actions because they don't talk, right? That's what she did. So she nudged a ball to किसी चीज को ऐसे धकेल के अब वो है तो उसने उसको उसकी तरफ कर दिया, right? Sure, Kitty, I will include your ball. Jenny put Kitty's ball in the can. Jenny put the top on the can with tape. So she sealed it with what? She sealed the can with what? Tape, With right? Right? She used the tape to seal it. On the front, she wrote Jenny and Kitty's time capsule with a thick black marker. अब marker क्या होता है जिससे आप लिखते हो? Thick black marker. Thick means जो खुद मोटा मोटा लिखा जा सके जिससे, right? Thick. She carried क्या है अब? Carried किसी चीज को क्या? उठाना, लेके जाना, उठाना. She carried. उठाना lifted होता है, carried होता है किसी चीज को लेके जाना, उठा. So she carried the can outside. After grabbing a shovel, again shovel क्या है किसी को पता है? जिससे खोदते हैं चीज को. अब इंडिया में आप उसको क्या कहते हो? shovel को कहीं भी कहते हो, मेरे ख्याल पंजाब में तो कहीं कहते हैं. I don't know in other language. Anyone understand what I'm saying? खोदने वाला जो होता है, अगर आप किसी गांव से हो तो आपको तो पता होगा उसको क्या कहते हो. यस मैम, छोटा सा होता है, मिट्टी मतलब कुछ भी ग्राउंड वगैरह खोदने के लिए. हाँ. कसी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कसी. हाँ, कसी. पंजाब में उसको कही कहते हैं. कही. So from the shed जो शेड बने होते हैं जैसे, so उसके घर में शेड था, तो she buried her time capsule in the garden. उसने उसको buried means दबा देना किसी चीज को, like समझते हो ना? buried, she buried. देखो इस तरह से कुछ verbs को आप रखो, actions तो you know how to use it because कहीं पे भी कोई आप इंग्लिश में बात करते हो तो you use the verbs, right? Verbs के बिना तो sentence form नहीं होता, ना noun के बिना, ना sentence verb के बिना. So all parts जहाँ पे जो भी है, it's everything is important. So she buried her time capsule where? Where did she bury it? She buried it in the Garden. Garden.
garden, right? So she buried it in the garden. All done. सारा काम हो गया अब. She told Kitty. Kitty को बोल रही थी वो. After a few minutes, Jenny signed. अब क्या है, अब साइन अब क्या करते जब लेके बोर हो गई वो, अब कि ओके अब मैं क्या करूं, what should she do next? She couldn't yo-yo. Why she couldn't yo-yo? Because she has buried. Right, she had already buried it, and she couldn't read her favorite book because she had buried those. So she'd, you see this one, she'd buried those. This word is actually had, but this is a contraction. Now she missed them. अब उनको miss करने लग गई. Now let's move on to the next page. Okay, who is my next reader? Ma'am, I will read for you. Sure. She scratched her head, then paused. She missed the sound of her bracelet clicking to meow. Kitty pawed the burial spot. Do you miss your ball? Jenny asked. Don't worry, I will get it for you. So Jenny dug up their time capsule. Kitty pounced on the ball, and Jenny pulled on her bracelet and read her book while yo-yoing under a tree in the garden. Okay. So what happened here? It's funny. What happened here? Anyone? Did she keep the stuff under that? She kept it buried, or she pulled out everything? She could not the wait. She was very excited again. Yeah, because the kids, what they do, right? So she scratched her head, then paused. She missed the sound of her bracelet clinking too. Clinking means जैसे bracelet की छन छन की आवाज आने ना, छन छन छन. Clinking too. Meow. Kitty pawed the burial spot means वहां पे पंजे मारने शुरू कर दिए cat ने अपने, जहां पे क्या था, बरी किया था उन्होंने coffee can, right? Okay. Do you miss your ball? Jenny asked. Don't worry, I will get it for you. So Jenny dug up their time capsule. Kitty pounced on the ball, and Jenny pulled on her bracelet and what? Read her book while yo-yoing. Yo-yoing means वो खेल रही थी उसकी yo-yo से ऐसे करके yo-yoing under a tree in the garden. So उसने वो सारा बॉक्स दोबारा निकाल के सारी चीजें बाहर निकाल के फिर से खेलना शुरू कर दिया. It was like बच्चों की स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा देर किसी चीज को नहीं उसको रख सकते, राइट? So she tried it. She got excited. Why? Because she saw that her principal found something. She dug it out, and there was stuff that students buried it 30 years ago, and she wanted to do the same thing at her home. And she put everything in the coffee can. She just buried it, but then she didn't have that kind of a patience, right? So she pulled everything out and started playing with her stuff again. Okay. Anyone wants to talk anything about it, or any other thing you have to share? Anything, or about the class, or about the lesson? Any comments? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. I would like to say here that this story show about the truth of our life. What is that truth? That we always like the old thing of our childhood, especially like that. When we see any old thing, we reminiscent of our old days. Like when we see our toys of our childhood, we reminiscent of our childhood days. Like similarly, the Jenny was sorry, when Jenny saw her principal, he was digging up a time capsule which was buried by some student 30 years ago. And she was feeling that it made her very excited. Then how would she feeling after 30 years when she would again see her old stuff? And it is not just about the child, it's also about us, because whenever if we even now we see our old photos, we reminiscent of our childhoods and we feel very good. Right.
Yes, so I mean, that was interesting. So did you learn any words, new words, or anything you think, oh, this is something new I learned today? Anyone? Anyone? Kubaib Shafi. You said, thanks, ma'am. I'm still in the process of learning English. I have completed sentences now. What to do next? Okay. So I don't know which sentences you are talking about, and you will be always in this process of learning because learning never stops. Yes. So, and Kolkata are, yes, you can join my class next Saturday. But for that, you need to send me your WhatsApp number on my WhatsApp. So as you know, my phone number is everywhere in my videos, on the top comment section or in my description. You can find the number and send me your phone number with your name. Okay, Lakhan, yes, Lakhan, welcome. So if anyone is interested to join the class, you all are welcome. I have more than 250 students in my phone, but only handful of students join the class. I can understand when you see this, oh, this is like a free, 100% free Zoom class, you get very excited. Oh, I'm going to join it. I will learn it. But then your enthusiasm just go down after like 1 or 2 classes. I don't know. But please keep in mind, if you want to become fluent, consistency is very, very important. You have to be consistent. ये नहीं है कि एक दिन practice कर ली और फिर छोड़ दिया. इस तरह से तो आप फ्लुएंट नहीं बन सकते, वो ही टूटी फूटी इंग्लिश जरूर बोलते रहोगे उसी तरह से. बाकी देखो, ये आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन कम एंड जॉइन द क्लास एंड स्पीक fearlessly because I am not judging you at all. मुझे कहीं पे लगता है तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ, जज बिल्कुल नहीं करती मैं आपको. ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डर क्या है. डर आपके अंदर है, डर बाहर नहीं है. तो वो डर आप ही को निकालना है, राइट? So Lakhan, you need to watch my videos so you can understand. Instead of asking me these questions, you will find out all the answers. तो शॉर्टकट कोशिश करो कि शॉर्टकट में चीजें मत ढूंढो. यू नो, जैसे कि कोई जैसे कह लो स्टेप्स हैं, लैडर है, तो एक लैडर के अगर बहुत से ज्यादा डिस्टेंस है तो आपके लिए चढ़ना मुश्किल हो जाता है, राइट? अगर लैडर के जो वो हैंड्स हैं तो इफ दे आर वेरी क्लोज यू कैन इजीली क्लाइंब. सो छोटे छोटे स्टेप्स में सीखो, बट लगातार सीखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो आप कोशिश करो जितनी भी वीडियोस आप हो सके देखो, लेसन्स की प्रैक्टिस करो. और आई एम एक्सपेक्टिंग मेनी स्टूडेंट्स टू जॉइन माय लाइव यूट्यूब स्ट्रीम, जो हमारी लाइव स्ट्रीम क्लासेस हैं एवरी डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड देन फ्राइडे 4 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके, so anyone from this class, Tahira, Aman, Galaxy, so please कोशिश करो कि join my class with your name. Shivam, anyone has any question, any thought, anything you want to share? Yes, anyone? Yes or no? Tahira, Aman? Yes, yes, ma'am. Your page in starting, I feel tough, but ending and middle, I enjoy and I Okay. understanding. Okay, you understand a lot. That's good. That's good. See, and now, moreover, when you keep seeing those kind of words and structures and information, then gradually you will start using the language. That's more important. बिकॉज वो कनेक्शन भी तो कोई बनना चाहिए ना. जब आप कोई सेपरेटली सेंटेंसेस सीखते हो तो उनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं होता, इसीलिए आप स्ट्रगल करते हो. वो इंग्लिश आपकी खत्म हो जाती है वहां पे फिर. इसीलिए स्टूडेंट्स कहते हैं मैम मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का. कॉन्फिडेंस इसी तरह से आएगा जब आपके पास वोकैबुलरी होगी, जब आपको पता है कि मैंने क्या एक्सप्रेस करना है, राइट? ओके, सो
Aman, you have anything to say? Ma'am, there was an instrument in the story which is used to dug up the ground. I don't remind its name. Can you please tell me? Shovel. S H. Kasi. हाँ. Okay, ma'am. SOV. Shovel. शवल से जमीन खोदते हैं. Okay. रेक होता है जिससे आप लीव्स को इकट्ठा करते हो, पत्तों को इकट्ठा करते हो. रेक कहते हैं उसको. Yes, ma'am. So shovel. Yes. Anyone? Okay, thank you. Okay, then everyone. I hope to see many of you next Saturday, and then every day, pretty much on weekly basis in my class. So Shivam, you were absent last time in my class. Yes, ma'am. I was just busy in some debate competition of my college. That's why I was not getting a time to attend this class, ma'am. I was thinking to join, but I was really very tired. Tired. Okay, no problem. But So I also know that tiredness is also like an excuse. But I think it was like my mind was playing with me. okay. So you Yes, had ma'am. a Yeah, ma'am. I want to ask a question like that today. Which stuff we read? It was it was good, but I think I want to know that जैसे कि आज के स्टफ में कुछ थोड़ा हार्ड सा लगा कि जो एक सिंपल से हार्ड की तरफ जो हमारा लेवल जाता है, यानी कि रीडिंग में हम सिंपल हो तो समझ आती है, पर जो जैसे हार्ड थोड़ा सा आज थोड़ा लेवल सही था, यानी कि जैसे कि अगर हार्ड लेवल पढ़ेंगे हमारा जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो हार्ड चीज है उसमें हमारा लेवल कैसे इम्प्रूव होगा मैम रीडिंग में, कि जैसे बुक होती है, लॉन्ग सेंटेंस होते हैं, तो जल्दी से फिर माइंड में ट्रांसलेट नहीं हो पाते, उनका मीनिंग समझ नहीं आ पाता जल्दी से. शॉर्ट सेंटेंस के तो हो जाते हैं, जैसे आज ही थोड़े लॉन्ग सेंटेंस थे, कई बार बीच में थोड़ा उन्हें बीच में अब माइंड में समझ पाने थोड़ा, यानी एक दो बार लाइन पढ़नी पड़ रही थी उन्हें. जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं मैम, बुक पढ़ते हैं, स्पेशली एकेडमिक बुक्स, उनमें जो लाइंस होती है, लंबी लंबी लाइंस होती हैं, उनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, यानी 2-3 बार लाइनें पढ़नी पड़ती हैं. तो मैम धीरे धीरे लेवल कैसे अप होता है कि एक इजी से हार्ड जो लाइन है हम उन्हें समझने लग जाएं. राइट. सो ऐसा करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, मैं एक आपके लिए लेसन लेके आऊंगी. नेक्स्ट सैटरडे हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें मैं 3 लेवल की रीडिंग लेके आऊंगी. सेम टॉपिक पे हम 3 लेवल की रीडिंग करेंगे. लो लेवल रीडिंग, मीडियम लेवल रीडिंग एंड हाई लेवल रीडिंग, सेम टॉपिक पे. ओके? Yes, ma'am. It will be very great helpful for all the students. So I will do that. I can do that on hundreds of lessons the same way, same topic. You can do different level reading for the same topic, and then even the questions will be different for same topic. Some of them, right? Yes. So because you are learning English as a foreign language, in other words, I will say as a second language, right? Because English is not our first language, even including me, right? It's not my first language. But how we enhance the language, that's very important, is to go from like stepwise, right? But again मैं वही कह रही हूँ कि जब आपकी academics हैं, आप उनको ignore नहीं कर सकते, because they are your academics. You have to read, you have to prepare for your examinations and everything. But when you are learning for your entertainment, you can do all those kind of practices where it's gonna help you in a very like a big way. I will say it's gonna help you a lot, tremendously. यस मैम, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ मैम, जैसे कि हम इंग्लिश में जैसे अभी फ्लुएंट में ब्रेक होते हैं, बीच में स्टक होते हैं, कहते हैं किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में हम बीच में रुक गए, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में SES में हम कहते हैं को बहुत बार गलती कर जाते हैं स्पोकन में. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी कभी S नहीं लगाते, SES नहीं लगाते. हम इन प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे कि शी गोज टू द मार्केट, अब हम भूल गए, अब हमने बोल दिया शी गो टू द मार्केट. ऐसी मिस्टेक कैसे सुधारे मैम? ये देखो, लैंग्वेज में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस, एंजाइटी जो है ना, एंजाइटी, समझते हैं एंजाइटी क्या होती है?
एंजाइटी है, एक बड़ा अजीब तरह का डर होता है, वो है एक स्ट्रेस टाइप होता है कि मैं ये गलतियां ना कर दूं कहीं, वो एक आपके ना एक अनजाना सा डर है और उससे आप बड़े अपने आप को स्ट्रेस में रखते हो। उस चीज को रिमूव करने की जरूरत है। तो उसमें क्या है कि जब आप अपनी लैंग्वेज पे अटेंशन पे करना शुरू कर देते हो, देन यू मेक लेस मिस्टेक्स। ओके, सो अब ये जो आप ये कह रहे हो ना, ये मेरी भी कभी प्रॉब्लम रही है, नॉट नाउ मे बी, बट ये मेरी भी रही है कि जबकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं वर्ब में, जैसे आपने कहा गो लगाना है या गोस लगा देना, तो ये सबके साथ होता है बिगिनिंग में, but gradually when you start paying attention, so that's what I am saying. ये मैंने जो भी यहाँ पे I am telling you based on my personal experiences as well as my students experiences, कि वो किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से बोलते हैं, because they every day I have in my class, right, and they write also every day in class too, so I can see कि किस तरह से लिखाई में भी किस तरह से वो करते हैं, रनिंग सेंटेंसेस हैं उनके, कोई पीरियड नहीं लगते कहाँ पे, या जिस तरह की आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो, गो है तो गोस किस करना है या किस तरह से लिखना है, तो इट्स ऑल हैपेंस विद व्हेन यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन। अब जैसे यहाँ पे कौन बोल रहा था मुझे नहीं याद, मैंने उसको कहा था, अमन था शायद, आई थिंक, कि जो अब अटेंशन पे करना कि हिज नहीं लगाना है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल इट्स हर, राइट, तो if he knows कि okay this is my problem and next time when I will speak I will try to pay attention, if I'm talking about a girl I will be using her not his, तो छोटी सी देखो अटेंशन है, अगर ये छोटी सी अटेंशन आप 2-4 दिन भी बात करो कोई प्रैक्टिस करो अपनी, तो पे करोगे ना, तो आपकी ग्रेजुअली वो खत्म हो जाएगी अपने आप, वो प्रैक्टिस से ही सारा क्वेश्चन। और अटेंशन प्रैक्टिस डजंट मीन अगेन कि वो तोते वाली प्रैक्टिस नहीं है, रट्टे वाली, राइट, अटेंशन वाली प्रैक्टिस वो इम्पोर्टेंट है। यस और मैम मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि वो हम कैजुअली बोलते हैं तो मैम हमें कहते हैं हिंदी में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु यदि हम किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे कहते हैं हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। मैम आपसे पूछता हूँ कि यदि आप किसी टॉपिक में बोलती हैं, जब कोई अननोन टॉपिक है, क्या आप में भी कोई हिंदी थॉट्स आते हैं, आप भी उन्हें ट्रांसलेट करती हैं, या आपको सीधा इंग्लिश थॉट आ जाता है जब किसी अननोन टॉपिक के बारे में सोचती हैं? कि आपकी भी ऐसे हिंदी वैसे आपकी इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, कि आपको भी पहले आपके माइंड में ट्रांसलेट होता है धीरे धीरे, जैसे कि अभी आप कैजुअली बोलेंगे तो आप कहते हैं वर्ड आप ट्रांसलेट करोगी, शायद जो स्ट्रक्चर होंगे और आप खुद ही आपके मुंह पे आ जाएंगे, या आप तो आपके साथ ऐसे क्या होता है मैम, ये पूछना चाहता हूँ। देखो ये है कि बिगिनिंग में यस डेफिनेटली जब आपकी इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी लैंग्वेज जो है वो ओवर पावर कर रही है, ओवर पावर कौन सी लैंग्वेज है आपकी, तो अगर आप बिगनिंग का पूछो तो बिगनिंग में नेचुरली माय फर्स्ट लैंग्वेज वर ओवर पावरिंग मी, राइट, जो मेरी फर्स्ट पंजाबी थी मेरी लैंग्वेज, तो आई यूज्ड टू डू दैट, राइट, ओवर पावर करती थी वो, बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग मोर इंग्लिश and started reading a lot and talking about it a lot, like the way we were practicing right now, जो हमने अभी स्टोरी प्रैक्टिस की है, जैसे इस तरह से जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, तो उसके बाद ग्रेजुअली automatically, I don't know how it happened and when did it happen, but automatically I stopped translating in my first language. इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितनी देखो आपकी नॉलेज होगी ना लैंग्वेज में, जितनी आपकी मास्टरी होगी लैंग्वेज में, वो ग्रेजुअल एक बड़ा वो एक प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, आप फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे इंग्लिश में ही सोचना है या हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं करनी, क्योंकि जो आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग, इफ योर इंग्लिश विल बी स्ट्रॉन्गर एंड देन इट्स गोना स्टार्ट overpowering your language, and then what will happen, your Hindi or whatever your first language will go down. Doesn't mean that you will forget about it, वो 100% नहीं होगा, because you will never ever forget your first language. एक चीज और मैं बता दूं, कहीं किसी को ब्रेन में अगर इंजरी भी हो जाए ना, ब्रेन इंजरी किसी को हो जाए,
तो people can forget the second language brain injury में, but they will never forget their mother tongue. ये रिसर्च है, ये मैं नहीं बता रही आपको, ये रिसर्च है, हुआ है बहुत लोगों के साथ कि कोई उनको अगर ब्रेन इंजरी हो गई तो दे फॉरगॉट द लैंग्वेज दे लर्नड आफ्टर दैट, सेकंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज, बट दे नेवर फॉरगेट देयर फर्स्ट लैंग्वेज. जो अपनी माँ की लैंग्वेज आपने सीखी है ना बचपन, वो लैंग्वेज आपकी नहीं जाएगी. तो ये आप, ये जैसे लोग भी कह देते हैं कई बार के हिंदी खतरे में है, पंजाबी खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है. आई एग्री विद देयर फियर आल्सो, क्योंकि हर जगह इंग्लिश की है कि इंग्लिश सीखो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो ये है वो है. इसीलिए मैं कहती हूँ कि देखो अपनी लैंग्वेज को मत छोड़ो, डू नॉट, अपनी लैंग्वेज जरूर बोलो, घर में बोलो, पेरेंट्स के साथ बोलते हो तो बोलो, ग्रैंड पेरेंट, अगर पेरेंट्स इंग्लिश बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बोलो, कोई भी, पर अपनी लैंग्वेज को, दूसरी चीज अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करो अपनी लैंग्वेज की. दूसरी चीज है कि जो भी लैंग्वेज सीखते हो उसकी भी रिस्पेक्ट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपका एटीट्यूड ये है कि मुझे इंग्लिश इसलिए सीखनी है कि मुझे जॉब चाहिए, पर मुझे इंग्लिश सीखना पसंद नहीं है, तो देखो वो तो नेगेटिविटी तो आपकी शुरू हो गई शुरू से ही, तो फिर वो कैसे आएगी आपके पास, ये भी तो इम्पोर्टेंट है. तो लैंग्वेज, हर एक लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करो. और दूसरी चीज है कि ये सारा कुछ ग्रेजुअली होता है शिवम. That's what I'm saying. I want you to just think about today's topic. Forget about everything. जो आज आपने सीखा, जिस तरह से हमने प्रैक्टिस की, right? For on each, like we just read 3-4 pages. बहुत छोटी सी रीडिंग थी वो, but we spent so much time on it. We Yes, just studied each and every word, not about translation. We were talking about what happened, why did it happen, what she did, how she did, right? What were the things, the words, and we talked about grammar also. We talked about her mental state also, why she was doing it, why she was so curious. I mean, हर part हमने उसका touch किया. So I think now you don't need to translate anything from that story now. I think you know it in English only now. yes, Right? So that's the way. Then when you go through in a detail and you touch each and every point, then gradually उससे क्या है कि जो ग्रामर है या जो वोकैबुलरी थी, चाहे वो वर्ब्स थे या नाउन्स थे या प्रेपोजिशंस थे, जो आप बार बार उनको यूज करते हो, कहीं और देखोगे बहुत सारे वर्ड्स, आप वो बहुत सारी वोकैबुलरी जो आपके नाउन्स हैं कहीं और किसी रीडिंग्स में देखोगे, तो यू कैन स्टार्ट मेकिंग कनेक्शंस. अरे आई ऑलरेडी नो दिस वर्ड, आई लर्न दिस वर्ड समवेयर. सो देन ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, you don't need to translate in your language because then you know that word in English, right? yes, ma'am. Understand? मैं आपको 100% समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, राइट? प्रैक्टिस एंड डिटेल, टच द डिटेल, ऊपर से नहीं पकड़ो. इन अदर वर्ड्स हिंदी में कहूँ तो जड़ को पकड़ो. यस. मैम एक और क्वेश्चन था मैम, जैसे कि आप हमेशा सजेस्ट करती हो कि हम सिंपल इंग्लिश बोलो और सिंपल वर्ड यूज करें. मैम जैसे कि आप भी सिंपल इंग्लिश यूज करती हैं और हम भी काफी सारी समझ सकते हैं, समझाते हैं, सॉरी, हम अंडरस्टैंड कर जाते हैं. मैम पर यदि हम हार्ड वर्ड को यूज नहीं करेंगे तो मैम हमें वो हमारी फिट कैसे होगा हमारे माइंड में. जैसे कि कोई भी हार्ड वर्ड है, हम जैसे ट्रांसपायर है, ट्रांसपायर का आई थिंक अर्थ होता है कि कुछ होना. और मैम ऐसे में यदि इसको बार बार यूज नहीं करेंगे तो मैम हमारे याद कैसे होगा. यदि हम खाली सिंपल इंग्लिश में सिंपल वर्ड को यूज करेंगे, मैम जो हार्ड वर्ड है हमारी वोकैबुलरी हम कैसे ऐसे स्ट्रांग होगी यदि हम उन्हें बार बार यूज नहीं करेंगे, तो यदि हम सिंपल इंग्लिश यूज करेंगे ज्यादा. देखो, जब आप सोशल लैंग्वेज यूज करते हो वो डिफरेंट है. सोशल लैंग्वेज जो है वो सिंपल ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे क्या है कि एक आम इंसान आपको समझ सके, राइट? जब आप प्रोफेशन में हो, आप अगर उस प्रोफेशन में फॉर एग्जांपल जिस फील्ड में हो आप, तो उसमें तो आपकी बहुत सारी टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है जो आम इंसान को समझ नहीं आती, राइट? सो बट अगर आप देखो इस तरह का वर्ड जो आपने अभी बोला, अगर आप किसी अब मैं क्या कहूँ, हो सकता है आजकल तो रेडी वाले भी मास्टर्स किए हुए हैं कई लोग.
I'm not saying, but I'm just giving you example कि अगर आप जिसको आपसे काफी कम इंग्लिश आती हो, अगर आप उससे जाके उस तरह की इंग्लिश बोलोगे तो वो तो घबरा जाएगा ना, उसको तो समझ भी नहीं आएगी, तो वो कम्युनिकेशन है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपकी किसी के साथ. यस मैम, जैसे यदि हम हिंदी के कुछ कठिन वर्ड बोलने लग जाए किसी सामने बहुत ज्यादा. That's the point. अब अगर यहाँ पे मैं सिंपल इंग्लिश बोलती हूँ आपके साथ, तो माई पॉइंट इज के माई पर्पज इज के एवरीवन कैन अंडरस्टैंड मी, अगर राइट. बट व्हेन आई एम एट माय वर्क प्लेस आई यूज्ड सो मेनी वोकैबुलरी रिलेटेड टू माय वर्क, राइट. वहां पे मेरी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होती है मेरे कोवर्कर्स के साथ. You understand? But when I talk to, and it depends on when I talk to my students who are new arrival in India, not in India, sorry, in America, तो मैं उनके साथ तो सिंपल ही बोलूंगी, जिस तरह के स्टूडेंट का लेवल है उसके हिसाब से इंग्लिश बोलूंगी. So अगर आपको कोई वर्ड आता है, yes, you can use it, but try to use it in where you are at first of all, कि कहाँ पे आप किससे बात कर रहे हो. अगर आप अपने किसी प्रोफेसर से बात कर रहे हो कॉलेज में, तो yes, you can use that kind of vocabulary and they will understand and you can communicate with them. But मेरा मतलब है अगर आप कहीं जाके बाहर किसी शॉपकीपर को इस तरह की इंग्लिश में बोलोगे तो वो तो बेचारा घबरा जाएगा ना. उस मेरा पॉइंट वो है, सिंपल इंग्लिश doesn't mean के never use the higher level vocabulary words, but my point is के जगह देख के उस हिसाब से इंग्लिश बोलो. मैं इस तरह से कहती हूँ. यस सर. और मैम एक और क्वेश्चन था बस लास्ट, जैसे कि पॉजिटिव वर्ब होती है गेट और मेक. मैं आपने सुना हो गेट और मेक, जैसे हम कहते हैं कि चाय बनवाना, हम कहते हैं शी मेक मी ए टी, शी मेक्स मी ए टी, उसने मुझसे चाय वह मुझसे चाय बनवाती है. तो मेक जैसे पॉजिटिव वर्ब होती है ना, मेक और गेट, इनको बोलने में काफी हम तकलीफ होती है क्योंकि इनमें ट्रांसलेट के लिए चला जाता है माइंड हमारा. तो टेंस हो गई, टेंस में नहीं जाता, इसमें बिल्कुल ट्रांसलेट करने लगता है माइंड बिल्कुल. मेक पॉजिटिव वर्ब वालों में से मेक हो गया, गेट हो गया. जैसे कि बार्बर ने मैंने बाल काटे, द बार्बर गॉट माय हेयर कट. हम लाइक पॉजिटिव, मैम पॉजिटिव वर्ब की कैसे प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से? You know, this is like you get हो गया. So see, these are the pattern sentences. इनको हम कहते हैं अमेरिका में पैटर्न सेंटेंसेस हैं. ये एक पैटर्न होता है इनका, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव, she got, he made, she made, and then you use those words in a different situations, right? Yes, so I mean that is just with the practice. And like a barber cut my hair, like okay, made my hair cut. Don't make it like, if I will say okay, I'm gonna have a haircut, I will not say barber made my haircut or get my haircut. I don't know, we just use it in a way. Some of the sentences when I see even on YouTube channels, that sometimes sounds very weird to me. ये किस तरह से है, ये क्या है? I mean, you can use a very simple way. That's what I'm saying. I don't know what you right now. If you have something on the screen, I can talk about it. But I will say, like, if I'm gonna ask my son to have a haircut, I will say, like, okay, go and have your haircut. Like, not I don't know. It's a very simple way. My point is like, I remember you wrote down once something in a comment, and I was just thinking he can say it was a wonderful class, or we enjoyed the session. It's a very simple way to say, or it had been this. I mean, there are so many in many situations you don't need to use that kind of language. That's my point. But you know it, you understand it, you communicate it. That's more important. I mean, do not make it complicated. That's my point. Yeah. But yes, when you are writing and when you are speaking, it's very different. Writing में और speaking में काफी ज़्यादा फर्क होता है. Yes. Okay, so next. मैम एक और चीज थी, एक वर्ड अप नाम की कैप है मैम, आप उसको जरूर रिव्यू करें. उसमें क्या है, जो वोकैबुलरी है
हम काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं, यानी पिक्चर के साथ पिक्चराइज किया जाता है, लिस्ट पिक्चर के साथ समझा जाता है वोकैबुलरी को। यस मैम, जैसे ऐसे, बिल्कुल ही, यस मैम। All verbs. यस मैम। All मैम verbs मैम with आपने pictures. ये खुद बनाई है या? All verbs with pictures. And I have this one, all sight words, most useful words with pictures. Like not with pictures, the words you use with the in sentences, right? No, I didn't. You can buy all this stuff from the stores. You don't need to make these. Why I'm gonna make these? But Yes. some, yeah. So see here how you use the vocab. We use the, I will teach you how you learn the vocabulary if you want to keep the word in your mind forever. Maybe I'm going to make a lesson, like you can have like this index card, for example, and then you have a word in the middle, and then you make the squares, and then you can have your definition. What do you think the meaning of that word? Then you can have a definition if you want to look in the dictionary, and then you can draw a picture. Then you can think about the synonyms and the antonyms of the word. You don't need to have hundreds of synonyms and the antonyms of the word, but that really helps you. And if you learn that way, like maybe two words maybe, or even a one word every day, that's going to help you. So there are so many organized strategies to help you to learn the words. I don't buy all those apps, whatever you are telling me, because Yes, ma'am. I'm a classroom educator, and the things we use are, I will say, in a real life situations where students practice and they get the benefit out of it. ये जो एप्स हैं उनको मैंने कभी एक्सप्लोर की, मतलब देखी है मैंने बहुत सारी एप्स, बट I think the more effective way is to learn the vocabulary is to be creative. मैं memorization के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ शिवम, frankly speaking. Yes, ma'am. बिल्कुल memorization नहीं, मैं कहती हूँ be creative, क्योंकि memorization मैं again कह रही हूँ कि सबसे lower level का skill है memorization. तो मैं नहीं चाहती कि आप वो memorization, तो वही मुझे फिर वही इंडिया पुराना मेरा स्कूल टाइम याद आ जाता है. Yes, ma'am. एक स्टूडेंट बोल रहे, पीछे पीछे सारे बोल रहे हैं. जब जैसे अब देखो मैंने अभी जो स्टार्ट किए हैं मंडे से, जो मैंने लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ आपको, तो जैसे yesterday I was asking you about के your family members, you know, or where are you from? You live in a city or in a town, and I want you to practice with me the language, but I want you to be creative. अपनी लाइफ के बारे में सोचो. आपकी फैमिली डिफरेंट है मेरी फैमिली से, आपकी लिविंग कंडीशन डिफरेंट है मेरे से. तो उस तरह से बी क्रिएटिव. Memorization नहीं. हाँ, if you are learning some kind of a sentence structure from me, yes, you can pick up that. If you're learning some kind of a sentence frames, language frames, yes, you pick up the language. Or pronunciation, yes, pick up the language. बट वो तोते वाली रट्टे वाला काम मत करो, बिकॉज वो सबसे लोअर लेवल का स्किल है. मैं फिर कह रही हूँ कि मेमोराइजेशन जो है वो सबसे लोअर लेवल का स्किल है. वो तो जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये बोलो, वो पीछे पीछे आपके रिपीट करे 100%. वो सेंटेंस सीखने की फेवर में मैं नहीं हूँ, जो कि 99% चैनल्स जो यूट्यूब में है वो यही सिखा रहे हैं. क्रिएटिविटी नहीं है. Yes. तो yes, I am honest. People, I know many people don't want to hear, because वो जैसे अभी शुरू में एक जो था, he wanted to hear कि अमेरिका में किस तरह से आना है, तो वो I was keep telling him कि वो सारा फ्रॉड है, बट आपने अपनी माइंड एक सेट किया होता है. तो प्लीज अपना जो माइंड सेट है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाओ, कि दूसरे के अकॉर्डिंगली जो एक कोई एक्सपर्ट आपको बता रहा है तो वो. और अगर मैं आपको ये बता रही हूँ, इस यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है. मैं अगर आपको क्रिएटिविटी सिखा रही हूँ तो इट्स अ चैलेंजिंग एक्टिविटी. नहीं तो Yes. मैं भी
मैं भी लेके आ सकती हूँ। अरे आप हजारों की बात कर रहे हो, मैं लाखों सेंटेंसेस लेके आ सकती हूँ, करोड़ों सेंटेंसेस लेके आ सकती हूँ। और मैं रोज यहाँ पे 100 सेंटेंसेस लेके आ जाऊं, मैं कहूँ चलो बोलो मेरे साथ साथ ये है, इसकी ये ट्रांसलेशन है, वो तो सबसे इजी काम है मेरे लिए। मैं क्यों यहाँ पे कई बार स्टोरीज क्रिएट करती हूँ, क्वेश्चंस क्रिएट करती हूँ कि नहीं मैं ये पूछूं वो पूछूं, बिकॉज आई वांट यू टू बी ऑन अ हायर लेवल, बी क्रिएटिव, एनालाइज द थिंग्स, एवेल्युएट द थिंग्स, सिंथेसाइज द थिंग्स, वो सारे स्किल्स सीखो आप हायर लेवल के। अब देखो जैसे ये हमने स्टोरी पढ़ी थी 4 पेजेस की भी नहीं, वो बहुत छोटी थी स्टोरी, बहुत बड़े, मैंने तो वो उसके फॉन्ट साइज ही जो 32 का रखा था ताकि वो सबको दिख भी जाए क्लियरली। तो Yes. उस पे अगर मैं उस स्टोरी को आई मीन ओके चलो पढ़ो, स्टोरी पढ़ ली आपने, ओके चलो अब मेरे यहाँ पीछे पीछे बोलो, इस तरह से बोलो, तो वो तो सबसे इजी काम है। But we were creating the language, we were making the connection, we were paraphrasing, you even came up with the theme के theme क्या है इसका, या किसी ने paraphrase किया। तो देखो सबने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने कंट्रीब्यूट किया। बाकी जो स्क्रीन पे था आपने उसमें से भी बहुत कुछ लेके उसके थ्रू एक्सप्रेस किया। तो वो आपने अपना काम भी किया, अपनी तरफ से भी क्रिएट किया, बट जो स्क्रीन पे था उसने आपको हेल्प करी। वो चीज सीखने की जरूरत है आपको। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स बाहर निकलो, ये बॉक्स में हो आप। 99.9% स्टूडेंट बॉक्स में थिंकिंग है आपकी। प्लीज, चाहे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं किसी को छोटा नहीं दिखा रही, या मैं एज एन एजुकेटर मैं आपको बता रही हूँ कि थिंकिंग को बाहर निकालो। एक तो थोड़ा ओपननेस रखो अपने में कि ये नहीं है कि मैं इस कंट्री से हूँ या मैं इस रिलीजन से हूँ तो मुझे इस तरह से ही सीखना है। नहीं, हम यहाँ पे लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल कंट्रीज, ऑल कल्चर्स, ऑल रिलीजन्स। किसी के लिए कोई ऐसा नहीं है, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू एंड यू ऑल आर सेम फॉर मी। तो वो एक हमें ओपननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखो अब इस तरह से है कि वी ऑल आर कनेक्टेड। अब मैं अमेरिका में हूँ, आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या नेपाल में हो, वी ऑल आर कनेक्टेड ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म, राइट। तो अब वो दुनिया तो रही नहीं ना कि अपने अपने कंट्री में या अपने अपने सिटी में, अब तो इंटरनेशनली है। जॉब्स करते हैं लोग दूसरे दूसरे कंट्रीज में जाके, अब यहाँ पे हम लोग रहते हैं तो हमारे तो यहाँ पे इतने कल्चर्स और इतने कंट्रीज के लोग हैं और फ्रेंड्स। Yes. तो उस तरह की ओपननेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक किसी लेवल पे जाना है तो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आल्सो, बहुत बड़ी चीज है, राइट। So Shivam, stay with this channel and keep watching and practicing, and you don't need to ask me these questions. One day you will be telling me. जैसे Yes. मेरे और स्टूडेंट्स हैं जो बहुत देर से मेरे साथ हैं और उन्होंने बहुत कुछ सीखा, और वो खुद अब उनकी थिंकिंग कितनी चेंज हो गई है वो खुद बताते हैं मुझे कई बार। Yes. Okay. So everyone, we should conclude this lesson now, and I will see you tomorrow morning, my 5:30, but your 4 o'clock evening time. So if you will be available, then join the class and then interact with me through chat, और अपने घर में प्रैक्टिस करनी है आपने मेरे साथ लैंग्वेज। Okay, have a wonderful time and stay blessed. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Good night.